বন্ধুরা, আমি রাসেল, আপনারা দেখছেন স্কেয়ার রিয়াকশন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো পাকিস্তানি কাবাব কিভাবে তৈরি করে, সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো আপনারা ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখুন। তো চলুন আমরা সরাসরি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওতে ছাপিয়ে পড়ি। বন্ধুরা, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিশাল বিশাল বড় বড় খাসি তারা কেটে পিস পিস করছে। আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটি। বন্ধুরা, এটা কিন্তু অরিজিনাল অরিজিনাল খাসির গোস্ত। তারা কিন্তু কেটে পিস পিস করে সুন্দর করে তারা সাজিয়ে রাখছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো থেকে 5টা তারা খাসি কিন্তু তারা ব্যবহার করে তারা কোটাকুটি শেষ করেছে। দেখতে পাচ্ছেন மங்களகரமா மஞ்சள்ல ஆரம்பிக்கிறோம். এরপরে যত প্রকারের মশলা আছে এই মশলাগুলি তারা সুন্দর করে কেটে ফিনিশিং করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দেখতে থাকুন। সামনে অনেক ইন্টারেস্ট, অনেক কিছু বিষয় আছে যা দেখলে আপনারা অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। টমেটো, আপনারা দেখতেছেন এত সুন্দর টমেটো তারা এই যে রেসিপি বলেন বা কাবাব বলেন তার ভিতরে তারা দিবে। கீழே கொட்டினா வாலி சுருக்கு நடிக்கணும். ரெண்டாவது கிடக்கட்டுமா? இதையும் எடுத்து குட்டியா நம்ம எடுத்துட்டு வரேன். நறுக்கிறியானே சீக்கிரம் வேமா தாளத்தை தூக்கிட்டு உட்கார்ந்து நீ கரெக்ட் தானே? நீ நான் சொன்ன கரெக்ட். வயசு யாருக்கு மூஞ்சில বন্ধুরা, তারা কিন্তু রান্না করার জন্য তারা চুলা তৈরি করছে, যেখানে তারা রান্নাটা করবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম রেডিমেড চুলা তৈরি করছে তারা। মানে হঠাৎ এক জায়গায় যে মানুষ যেভাবে রান্না বান্না করে খায় ঠিক সেরকম তারা রেডিমেড চুলা তৈরি করছে, যাতে একদম গ্রাম্য পরিবেশে। செக்கில ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய். அஞ்சு இளம் குண்டாத் கறி. গরম তেলে তারা তাদের গোস্তগুলো তারা কষিয়ে নিচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து, அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு, நறுக்கின தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கல்லுப்பு,
মোটামুটি যত প্রকার মশলা দিয়ে সুন্দর করে তারা কিন্তু জিনিসটা ঢেকে দিয়েছে। এরপর দাও 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 করে তারা আসলে একটু কাজের ফাঁকে একটু মশলা দুষ্টু ফাজলামি করা লাগে, তাই তারা করছে যাতে মনের ভিতরে একটু আনন্দ ফিল হয়। கருவேப்பிள்ளை உரிபட உரிபட அவ்வளோதான் இறக்க வேண்டியதான் இறக்க வேண்டியதான் முடிஞ்சு কালার মানে গোস্তের যে কালার সেই কালার তো গ্রামের একসময় মানুষ কলা পাতায় ভাত খেত, তারা রান্না বান্না করে সেভাবে কলা পাতায় কিন্তু তারা খাচ্ছে। சூடு தான் அதிகமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறது? அருமையாக இருந்திருக்கு। তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে আসলে খাবারটা খুব স্বাদ হয়েছে। அள்ளி சாப்பிட்றா, அள்ளி அடிச்சு ஏற்றுங்கடா। ஒன்றால் தான் ரெண்டு வருது, அடிக்கடி தட்டுறீங்க, யார் தான் உரியுதுன்னு தெரியல। யாரும் சோறு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை, கறியாக போயிட்டு இருக்கு, கறியாக அடிச்சு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கியா? அதுக்கு அதுக்கும் போய்கிட்டே இருக்கா। একটা বিষয় வாங்கி நல்லா வெட்டி விட்டு நல்லா பெரிய சட்டில நல்லெண்ணெய் ஊத்தி இந்த கறியை போட்டு நல்லா মানবতার সেবায় তারা কাজ করছে। பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு போட்டு சேர்த்துக்குது। তারা যত রান্না বান্না করে இது সব রান্না বান্নাগুলো மட்டன் கராஹி வந்து பாகிஸ்தான்ல ரொம்ப ஃபேமஸ், நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க। நம்ம இன்னைக்கு இந்த மட்டன் கராஹி செஞ்சு சாப்பிட்டுருக்கோம், দরিদ্র মানুষকে তারা அருமையா இருக்கு। তারা அது খাওয়ায়। தக்காளி நிறைய சேர்த்தோம்னா அது ইনিப்பு சுவையோட வேற லெவல் டேஸ்ட் ভালো লাগছে, ஆயிருச்சு। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, পরবর্তী ভিডিও যাতে সরাসরি আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন এবং সর্বদা আমাদের পাশে থাকবেন।